Consider you can send the answer on Zoom chat. Zoom chat या WhatsApp में भी भेज दीजिएगा. I think it will be easier for you to take a photo and send it on WhatsApp rather than writing the whole name. Once you're done, you will send the answer on WhatsApp. Okay. Okay, sir. Done, sir. You will send on WhatsApp ना? भेज दिया आपने? Yes. I have just received it. Yes, very good. Nice. Let's look at some other question. देखिए सवाल पढ़ के बताइए. Will you be able to do this one? Yes, sir. ठीक है. Thank you.
Send your answer on my WhatsApp once you're done. Oh, Khadija also joined. Khadija and Khadija both are here. हमको पता ही नहीं चला. If try to अच्छा थोड़ा सा Khadija, the first question is a bit, first answer is a bit wrong. UBI नहीं होगा ना, UN होगा ना. UN होगा. अब ठीक है. Yes, Amna, can you tell me how did you do the second one? Yes, Amna. Yes, sir. How did you do this second question? आप समझाइएगा. हम्म. ये सही, जल्दी बोले. जी, Amna, what happened? See again. Write the atomic number. They are asking the atomic number and the element that is present in the third period and the 17th group. ठीक है. थर्ड पीरियड में है और 17th ग्रुप में है. थर्ड पीरियड का मतलब क्या हुआ? पीरियड नंबर टेल्स अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. थर्ड पीरियड में इसका मतलब वो थर्ड शेल तक है. दैट मीन्स आवर एलिमेंट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ 1s2
2s2 एंड 2p6। तो आपका जो एलिमेंट है वो 10 से ज्यादा है। ठीक है, 10 से अब कितना ज्यादा है? एज यू कैन सी इट इज इन द 17th ग्रुप एंड द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में आपके पास क्या होगा? पहला जो इलेक्ट्रॉन आप जो नेक्स्ट आएगा 17 ना, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एस मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसके बाद 3p5 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 10 आपके पास दो, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7, हाँ। सो 5 + 2 इट इज इक्वल टू 7 एंड देर इज नो 3d बिटवीन 3s एंड 3p, है ना? 3d आएगा फोर्थ पीरियड में। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट वी हैव गॉट। अब यहाँ पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 17। 17 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, तो Cl। ठीक है, प्लीज राइट दिस। बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है लेकिन चलिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द पीरियड एंड ब्लॉक टू विच ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Mg इट इज 12, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। थर्ड पीरियड एंड द ब्लॉक इज गोइंग टू बी s ब्लॉक। उसके बाद है Fe दैट इज 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, 6 + 4 10 electron, 6 + 4 10 electron, and then here 6 electrons. Now the last shell that we are, the maximum number, the maximum pqn is what? 4. So it is fourth shell, and the last electron is filled in the d subshell, that is d block. Please copy this down. We write next question. See here. Arrange the following in decreasing radius, है ना? तो यहाँ पे आपके पास अनायंस है एंड वी नो दैट न्यूट्रल आयंस, neutral atoms, they have the not the largest size, but rather I should go like this. Rather the cations. Cations have small size followed by neutral, and the largest size is with anions. अब यहाँ पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा. So O2 negative is largest, followed by O negative, and then followed by O. Write this down. Series. Why noble gases have more ionic, more signs than halogens? ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्या लिखना है आपको? छोटा सा स्टेटमेंट है, विच इज नॉट रियली द, मतलब उसमें कोई भी ऐसा खास रीजन नहीं इस्तेमाल हो रहा है फ्रॉम द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बट रादर द डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट हियर. तो नोबल गैसेस दे हैव लार्जर साइज देन हाइड्रोजन, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिकॉज एज वी गो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज इज डिक्रीजेस. बट नोबल गैसेस में क्या होता है? यू राइट एज वैंडर वॉल रेडियस of noble gas is measured
As van der Waal radius of noble gas is measured, therefore they have more signs than halogen. और halogen में क्या होता है? Halogen and halogen which has covalent radius. Please write this down. The next question is how electron gain enthalpy of sulfur is more than oxygen. ठीक है? Here you have to compare the electron gain enthalpy of sulfur and oxygen. Sulfur है versus oxygen. So when we are comparing, we know that sulfur and oxygen they come in the same group. पहले ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फिर क्या आता है? सल्फर आता है. They are asking that how is the electron gain enthalpy of sulfur? It is more than its oxygen. होना ये चाहिए था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए था, but it is the other way around. The reason is oxygen cannot hold a large number of electrons. The electron gain enthalpy of sulfur is more than oxygen due to small size of oxygen, and when you add the extra electron in the oxygen, there is more inter-electronic repulsion than sulfur. ठीक है? सल्फर में आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आराम से वो एकोमोडेट कर सकता है, बट ऑक्सीजन के नॉट, बिकॉज ऑक्सीजन छोटा साइज का होता है. सेम आपका एक सवाल आता है बिटवीन फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन का भी. ठीक है? प्लीज कॉपी दिस डाउन. आई होप यू हैव रिटन दिस पॉइंट. ठीक है? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नोट्स में भी वहां पे होगा. ठीक है? ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन बोथ. वाई? ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इट इज मोर देन ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन बोथ. तो देखिए नाइट्रोजन कहाँ पे आता है? यू हैव कार्बन, देन वी हैव नाइट्रोजन, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन. सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कार्बन एंड नाइट्रोजन. इन दोनों के बीच में आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन बोथ. सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, सॉरी, कार्बन और नाइट्रोजन को हम लोग देखते हैं. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे देखिए, as we go left to right in a period, what happens? The size decreases.
Therefore it is difficult to remove electron from नाइट्रोजन देन कार्बन। ठीक है, वेरी गुड। तो जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जा रहे हैं तब भी क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का ज्यादा रहना चाहिए, बट ऑक्सीजन का क्या है अगेन कम। नाइट्रोजन का किससे ज्यादा है? कार्बन से भी ज्यादा है और ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। सो व्हाई दिस साइज रूल इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कम इनटू प्ले। What is the electronic configuration for nitrogen? As you can see, it is 1s2, 2s2, 2p3. This 2p3, it is what it is? Half filled, and that is why it is a bit stable. और ऑक्सीजन क्या है? 2p4। ऑक्सीजन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे देन इट विल बी 2p3। अब ये थोड़ा हाफ फिल्ड होकर थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन से दैट नाइट्रोजन इट इज ऑलरेडी स्टेबल, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द half filled 2p3. But since oxygen, it is what? Oxygen क्या है? 2p4 है, it is partially filled, that is why we can easily remove the electrons. तो नाइट्रोजन से निकालना क्यों मुश्किल है? बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड एंड इट इज स्टेबल। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा रीजन आएगा? रीजन आएगा साइज का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रीजन आएगा हाफ फिल्ड वाले। ठीक है, प्लीज कॉपी द जस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉपी दिस डाउन क्विकली। मूविंग ऑन। What is the significance of the term isolated gaseous atom while defining ionization enthalpy? ना ionization enthalpy की जगह electron gain enthalpy भी वो पूछ सकते हैं कि what is the importance of this particular word isolated gaseous atom? When we have isolated gaseous atom, they are very widely separated, and that is why interatomic forces are what? Interatomic या intermolecular forces are very small. And when you have gaseous atom, यहाँ पे देखिए एक तो टर्म है आपके पास, एक क्या कीजिएगा? First reason is as in isolated gaseous atom, interatomic forces are minimum. Interatomic forces are minimum and ये लिख लीजिए, एक रीजन काफी है इसमें ना, एक मार्क्स का आता है। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए की वजह से लिख सकते हैं, सबको हम लोग एक स्टैंडर्ड में रखना चाहते हैं। सोडियम एंड Mg पॉजिटिव हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम
mg positive requires more energy, why? ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन सी दैट वी हैव व्हाट मोर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना, इट इज व्हाट हैविंग अ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन सोडियम एटम, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिसमें लोग जेड इफेक्टिव बेसिस लिखते हैं ना, जेड इफेक्टिव ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव रीजन, ड्यू टू सिमिलर outermost electronic configuration. Try this question. Can you answer guys? आसान है, ज्यादा टफ तो नहीं है। The smallest size will be, see all of these are isoelectronic. The smallest size will be for the cation that is Na positive, and after that you will have the least negative charge, that is F negative, followed by O2 negative, and followed by N3 negative. In isoelectronic species, this is अभी cation, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद एनायन, तो cation सबसे छोटा होता है। How does atomic radius vary in a period and in a group? तो यहाँ पे देखिए, how does the atomic radius vary in a period? In period, atomic radius decreases from left to right. In period, atomic radius decreases from left to right. This is why, due to increase in effective
न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दूसरा हाउ डज द एटॉमिक रेडियस, ये हमें एक्सप्लेन भी कर दिया ना किस तरह से। इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप atomic radius increases from top to bottom due to increase in shell number. Write this down. You have to just write this question. I hope you have written the question. Now, see, we have been given three different elements, element 1, 2, and 3. They have given the ionization enthalpy of the first ionization enthalpy, the second ionization enthalpy, and the electron gain enthalpy. उसके बाद उन्होंने पूछा है which is the most reactive non-metal. Non-metal की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इफ यू सी इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करेगा, ठीक है, इट विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव नॉन द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, अच्छा ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो भाई हम लोग को देखना है जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है। उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में हम लोग देख लेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर है कितना, ठीक है, विल सी इफ इट इज अ गुड मेटल और नॉट। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नाउ वी हैव टू कंपेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, आपको एनाइजेशन थैलेपी भी देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन भी देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। इफ आई लुक एट द थर्ड एलिमेंट ना, इसमें साफ पता चल रहा है दैट द आयोनाइजेशन थैलेपी इज आल्सो वेरी हाई। फर्स्ट सेकंड दोनों ही काफी हाई हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज आल्सो पॉजिटिव, इट शुड बी रादर नेगेटिव। तो सी में तो आपके पास आ जाएगा द थर्ड एलिमेंट इज व्हाट इट इज, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल में आएगा आपके पास दिस फर्स्ट वन। व्हाई? बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ज्यादा है दोनों केसेस में, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज वेरी हाईली नेगेटिव, यानी कि इट इज वेरी ईगर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज फर्स्ट, और ये सेकंड वाला तो बच गया सेकंड, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नहीं है, बट द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज क्वाइट लो। So since the ionization enthalpy is low, it is going to behave like a metal, and that is why it is what? It is the least reactive non-metal. वो non-metal है ही नहीं, वो metal है। Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है।
Try this. See, for this what you need to do is सिक्स्थ पीरियड जो है ना, यानी कि सिक्स्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सिक्स्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कैसे करेंगे? लार्जेस्ट वैल्यू विल बी, वो सिक्स होगा यहाँ पे, है ना? फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, you have this particular formula ns n minus 2f n minus 1d np, ठीक है? तो अगर सिक्स होगा तो 6s 4f 5d और 6p, ठीक? तो 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है? So if you calculate this whole thing, this will be, see s में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो एलिमेंट भी आ जाएंगे ना। एक एलिमेंट का s1 होगा और दूसरे एलिमेंट का 6s2 होगा, उसके बाद 4f1 4f2 इस तरह से आएगा। So you'll have 14 plus 6 that is equal to 20 and 10 plus 2 that is equal to 12, so it will be equal to 32 electrons, which is C. So please write this down.